Anjuji, can you hear us? I mean, we can hear you. Yeah, Abhishek, you might like to mute. Abhishek, you might like to mute her and you can go to the next person. Bridge, you want to take over and share your thoughts on the way the political scenario from these elections? Abhishek, you can mute her. It would be easier. बाकी मैं देखता हूँ अगर उसकी जो हेल्पर अगर वो क्या Yes. So, Bridge, you there? Bridge is there. Yeah. Mr. Deepti Vilas ji with us, and he was very senior bureaucrat in UP cadre IS, and he was in Ministry of Home Affairs and Urban Development, and he worked with Mr. Kamal Nath. So I request him to put some light their experience that what he feels about the current election result, and what are the issues and what are the reason. Deepti Vilas ji. Yes. So we can't hear you. Yes, Bresji, I request you to please put some light, because we have some technical issue from our side. Bresji. Shriji, am I audible? Yeah, Bresji, please start. Yeah, Abhishek, I'm also comfortable now. Yes, you are audible now. Yes. So okay. I request you to please put some light on your Bharat Jodo experience and what you feel in current situation, current political situation. What are your opinion, and how you relate with the current election result in three states in the heartland states? Yes, sir. Okay, now I think everybody has seen my face. Good evening. I will seek your permission to put it off video because signals are very weak here. And I'll take 2 minutes to introduce myself and what is my view, as Abhishek is asking. Is it okay? I'll put it off, video off for a minute. Yes, sir. See, I'm staying in a very interior village in Maharashtra. And last 32 years, I have been with the cream of the country in different ways, but apolitical. So most of my thinking may not be very, very comfortable in the political circle. Though we have been interacting sometimes with Arvind Group or before that also. So I can't say that I'm very, very apolitical. But new design of politics. Like today, if you just see, irrespective of name of the party, most of the parties
have any clear agenda for the national development. Most of us, we are following the wrong track. Like, take the example of GDP itself. Is one of the biggest hoax. What spoils the nature, what spoils the humanity, that is taken as a yardstick of GDP. Well said, sir. What we call the progress of the human being is exactly inhuman activity. How I can rule over the other in today's present politics is taken as a sign of that I'm politically very, very strong. Today I was just listening Abraham Lincoln's. I'll take half a minute in that. Abraham Lincoln, as all of us, we know that he belonged to a very, very poor family. Correct. When he started working, his father, coming from the older generation like us, disciplinarian, he said that whatever you are earning, it is not your earning. You have to deposit 100% to the father. Father will take care of you. So this gave him the idea that this becomes a slavery to my father. And if this is me feeling bad, my father is making me slave, what about those slaves which are under somebody's slavery by force? The slavery system was on that time, Abraham Lincoln time. So he took a strong objection that now I will abolish the slavery. So many things are there to learn from the past. We all sitting here, we are behaving like slaves of circumstances. Parties are overruling. We call it Janatantra or Loktantra. Is it there? Are we taken into consideration anywhere in any policy decision or implementation of that, or after that, the result of it? However, I as an IAS officer or army officer or whatever, I'm working like a slave to the fellows who do not have manner. So somehow we have to go out of box thinking. There is a very beautiful, today most of us comparatively youthful, and we have time to discuss about it. So it's a very serious discussion. One more thing of Abraham Lincoln today was, suppose we take somebody as an opponent. Abraham Lincoln was the first who, when he became the president, whomsoever he defeated, he made him his number 2. So this is the real arrangement, that there is no opponent. We all in the kingdom of divinity, we are together. Whomsoever I am feeling he is my opponent, give him a higher place than yourself and see what is happening. So we don't have to fight with anybody. Trust that everybody is a divine being and everybody is doing their best. We have to improve our best collectively so that everybody starts following it. There are so many things we'll be discussing subsequently. I give it a chance to the others to talk about. Thank you. Right. No, I think very valuable. Point. Abhijit, may I add a point here? Yeah, please go ahead. Go ahead. This is a very hard-hitting statement, and I believe his heart is in the right place when he said that, and I fully respect his message. All that I'm saying is that the onus of being purpose-driven and being true, rooted to ground, and doing something that is more geared towards welfare. While the message is lost on most of the political activists and politicians who have joined the fray, I come from a very different mindset. I believe the politicians are doing what they are good at. Today we are discussing them and their strategies and their plans, and it is in the context of elections, and elections is first past the post. And good luck to them who did all the good, and that's where the congratulations should go. Purpose driven is a very different, conscious capitalism and being true to welfare and all is a very different context for a different day. Politicians are actually from us only. They respond to the society that they live in. They are one of us, and if collectively we have, let's say, deviated, for want of a better word at this stage,
it's offhand. It's a very heavy context that the gentleman has said. That is not, I would not say that it is being, again taking the message forward. I leave it to the others. This was just my 2 cents because I just heard something, and I believe it's let's keep it to elections. Yeah. Hey, I'll take can you half a guys minute. hear me? I'll just take half a minute. I cut short only because let the initial round, all of us introduce each other. And as Aman is saying, we must firstly trust that everybody, including politicians, we are the same. Instead of discussing what is wrong, we should find out what we can do together to uplift the whole human society, including the country, including the politician, everybody. Nobody is out of us. So that should be my way of thinking. That is way, and we are working on it also. So let the first round be completed, then we'll have the second round, third round, and beautiful start. All of you, congratulate Abhishek especially for taking the lead and all these things beautifully. Go ahead. Thanks. Go ahead. Yeah, please. I fully agree. Abhishek is our go-to person, and he is actually comes with a lot of on-ground learnings. We are still more bookish in trying to figure out what's going on. Anyways, I will let Parul take it forward. Abhijit, and- can you hear me now? Am I audible? Yeah, I can hear you. So, Brett, can you go ahead Perfect. and Okay. introduce yourself, share 2 cents? Yeah. Okay, Yeah, so hello everyone. Okay, yeah, Brett, Parul, can you? yeah, Am I I'm- audible? yeah. Okay, Parul, we have just requested Bridge to go and speak for a minute, and then we'll come to you. Sure, absolutely. Sure. Please. Yeah, Bridge, please go ahead. Okay, so it's a actually very difficult thing to introduce ourselves in this kind of a scenario because we are primarily confused lot, working in corporate world or running our own business for survival, doing some amount of political activation so that our country survives and gets into right direction. Right. So that way, I have two different profiles. I work for one MNC. I head their marketing and sales for their global operations. So that's I do for my earning and living. Political activation. I've uh, this thing for long, and for good or bad, I believe staying at back end of it, so that I don't get any large visibility, and the guys who are working on it gets the visibility, and that has a reason. Uh, I do it because I believe that I have certain understanding, right or wrong. That is probably you guys will decide or time will decide. But I think that what about creating at least 100 individuals who can think of their own, and they create their own circle or aura around. I've been relatively successful. I've created a few good guys who are doing exceptionally well in their respective political career. So that's what I've done. Coming back to my views on politics, one is progressively in India, one thing which has lost its relevance is ideology. And thanks to a large politician like Lalu Yadav and likes, and in our generation, Arvind Kejriwal and likes, they created their base based on ideology and they abused it to the core. So ideology clearly has lost its relevance, and with losing footprint of uh, Congress or receding footprint of Congress, I would say, the idea of ideology has died down. Now, where we are heading, this is again my view. These are my views. I'm subject to questioning. Uh, we are moving towards Hinduism-based politicking and nationalism-based politicking. Now, there is something like earlier we had right and left and then center. Hinduism and nationalism is sitting on the center, and there is one side which you call soft Hinduism, soft nationalism. The other side you call hard nationalism and hard Hinduism. And these are huge vote bank. You talk about BJP vote banks; they believe that they are hardcore nationalist. We are free to define the way they define and think. And Congress vote bank, they feel that they're soft nationalist. Everything is national, but we are soft. So soft to center and hard to center is the width which has emerged over years.
The other thing which is emerged is soft Hinduism and strong or hardcore Hinduism. So BJP and a large chunk of BJP followers, they believe in hardcore national Hinduism, and Congress believes that we can have Janeu over shirt, kurta, and show that we are soft Hindus as well. So that's how today's political circle is defined. Yes, we still continue to talk about caste, cash, culture, and all, and all regional parties have grown around that. But what we are progressively seeing is development has taken precedence, and this development, when merged with, someone was mentioning about the fifth varna, when that development is merged with this fifth varna, with tadka of this nationalism and Hinduism, if you can manage this curry in a right perspective, you are the winner. And wherever Congress has managed it well with their on ground presence, they are winning. Wherever BJP has managed their presence in right favor, they are winning. And same as with the regional. Exception can be your Dravidian politics, where they believe there is nothing called we are Dravidians, we have nothing to do with Hinduism and stuff. So they are non-Hinduism kind of a landscape. But that's how overall, if you see, Indian politicking is moving towards, apart from the way we understand it, and the way world pictures it, that caste is important, caste plays a key role, and all those things. So those will remain there, but we are moving towards this new dynamics. Progressively, BJP has understood it well, and they are doing great in most of the states. In few states where Congress has played well, like Karnataka and Telangana now, they are doing good. But I would say Karnataka was not BJP's winning. Congress winning. Karnataka was BJP team member here not willing to win Karnataka. And Telangana was clearly the hard work done by Revant Reddy. And Revant Reddy has been doing it for long. Not only that, he did it in last 1 year. He was actively working on it for long. And a right decision by Congress team. So that's my take on that. Again, one thing people used to talk about the last bit maybe. Chhattisgarh election, they were saying that BJP is not winning. We need to understand that tribals or people from that belt generally don't share their opinion on with anyone. So even if you have gone and voted for BJP, they'll come and मैंने तो कांग्रेस को वोट किया था जी, or they will not say anything. So predicting anything basis opinion poll or exit poll for states like Chhattisgarh, Jharkhand, to that extent Orissa, and to an extent Bihar also, would be not the right thing. You need to understand the pulse and behavioral pattern. So unspoken words needs to be understood and projected into your uh, analysis, and then you will only get right numbers. This wave was there for long, the Chhattisgarh wave, and BJP for last 5 years since they last time, they were working with tribals, and they're working with tribals in a big way, and that resulted in their win. So this is from my end. I'm Brajmohan Chaturvedi. Right. Thanks, Braj. Over to Parul. Do you want to take this conversation forward, Parul Majanji? Yes, hello everyone. I'm Parul Mahajan. So I'll give a little brief introduction. So I'm an international relations consultant. I also was running my media show by the name of Jai Hind, Parul Mahajan ke saath on India News and Z5. That was a defense show. I used to go on the borders, showcase how the Indian paramilitary forces, Indian Army, and the police forces work. Then I worked with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India for 2 years. I was heading the government relations and international relations advocacy. So 2 months back, I left it and I've started my own skilling business. So everybody, we are like a lot of panelists here. We are about 9, 10 panelists here. Everybody has a different view. But I will talk about my area of expertise, which is international relations. And without any bias, I will say that right now is a time of globalization, right? So global everywhere we hear. And right now, with the kind of aura that our Prime Minister has, I think he's the perfect brand ambassador to promote India on a global level. The kind of respect that we command when we go in foreign countries,
for making India soft power, be it sending, manpower from here, like skilled, unskilled, whatever. So right now, in terms of globalization, I feel that the leadership is really good in that area. And rest, I think everybody can discuss their areas of expertise. But I would like to say that yes, it is a golden period for India to progress and be a superpower. Right. No, I think it's a very valid point. And the way alt-right movement was started off by Trump, right? I think in a way it is coming back in that format in India as well. And I have seen so many of my friends telling me that in the US and in Australia and other places that there is a lot more acceptability. There is a lot more, Not just acceptability, but there's a lot of respect. They are respect. all looking at India for manpower, also skilled, unskilled, for everything, blue collar, white collar, all the CXO level. So we have really, emerged as, from like a nobody to somebody now. So we are, the Yes. way we are treated, the way we go to, like when I used to, go from the ministry side and, talking there with people, with the employers, the kind of respect and the kind of preference that we got over the people from other countries, it was amazing. That actually made us feel that yes, our leadership has, made this place for us and has made, given us that respect as an Indian. We are really valued much more in the global scenario today than we were a few years back. So I have experienced it personally. So Right. Vijay, to add to Parul's thing, I'll share with you one experience. Okay. अभिजीत जी, हमारे साथ अभी कांग्रेस से प्रबल प्रताप शाही जी हैं. He was earlier associated with AAP and he was our close friend, and currently he is heading Congress unorganized worker cell, and he is associated with AICC. So प्रबल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो अभी पिछले 3 राज्यों में जो कांग्रेस का चुनाव में प्रदर्शन रहा, जो हिंदी हार्टलैंड है, जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है, इसको कांग्रेस किस तरह देखती है? क्योंकि अभी न्यूज आई कि कांग्रेस का जो इंडिया ब्लॉक की बैठक थी वो भी अभी कैंसिल कर दी गई है, और ये कहां पर ये समस्या आई? प्रबल जी. धन्यवाद अभिषेक भाई और बिंदवी साहब और जितने पैनलिस्ट हैं, सबको मेरा नमस्कार. देखिए, जो 3 राज्यों में चुनाव थे, पहले मैं इस विषय पर बात करूंगा. 3 क्या 4 या 5 राज्यों में, 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हमसे ज्यादा वोटों से पाकर जीत गई है, सीटें हमसे ज्यादा पाई है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में कहीं पे 3%, कहीं 2%, कहीं 8% का ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है. ठीक है, हम कुछ लोगों तक अपनी बातें नहीं पहुंचा पाए, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिशें की, नरेंद्र मोदी जी ने जो कोशिशें की पोलराइजेशन की, उसका भी कुछ जगहों पर हम काउंटर तो कर पाए. जैसे तेलंगाना में उन्होंने बड़ी कोशिशें की, तेलंगाना में हमने कोशिशें की, वहां पर हमने उनको काउंटर भी किया. और साथ साथ जो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, जो अभी रेवंत रेड्डी जी की बात भी आ रही थी, अभी एक साथी शायद ब्रज जी कोई थे, उन्होंने बात भी की थी. रेवंत रेड्डी ने उस भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंड किया, मतलब वो उसको लगातार वो करते रहे, उससे लोगों के बीच में हमारा संवाद स्थापित हो पाया. कहीं ना कहीं हम संवाद पूर्ण रूप से, उतना जितना संवाद हमें करना था, हम उतना पूर्ण रूप से कर नहीं पाए. मुझे लगता है ये कमियां हमारी रही होगी, और हम उसकी समीक्षा भी करेंगे और उसको आगे भी बढ़ाएंगे. और मुझे लगता है कि ये 2-3% का जो गैप है, और ओवरऑल अगर 4-5 राज्यों को देखा जाए तो हमारे वोट तो ज्यादा है उनसे, 10 लाख 9 लाख से ऊपर ही वोट हमारा है. ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट, जनादेश को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इश्यूज हमने उठाए थे, इस इश्यूज पर वोट हमें काफी हद तक हमें भी मिला है. कुछ जगहों पे हमारी इंटरनल कुछ दिक्कतें हुई होंगी, और बीच बीच में खबरें भी आ रही थी, उसके भी कुछ परिणाम हैं. हो सकता है उसके कारण भी कुछ हम कम रह गए, शॉर्ट रह गए, लेकिन हम उसमें बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन है. जहाँ तक आपने इंडिया अलायंस की बात की, इंडिया अलायंस का कुछ दिक्कतें आई थी, आपने देखा था मध्य प्रदेश में.
लेकिन इंडिया अलायंस का दृष्टिगत जो था, इंडिया अलायंस बनाई गई थी लोकसभा को लेकर, और लेकिन हमने कोशिशें की, हमने राजस्थान में आरएलडी के साथ समझौता किया, हम लेफ्ट के साथ वहाँ समझौता नहीं कर पाए, लेकिन हमने तेलंगाना में लेफ्ट के साथ समझौता किया, पावर भी है लेफ्ट वहाँ पर, पावरफुल सेक्शन, कुछ सेक्शन इलाकों में उसके अच्छा वहाँ पर उसका काम है, तो उसका फायदा भी हमें तेलंगाना में मिला। हम मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए, हम आदिवासी ट्राइबल पार्टी से साथ गोंडवाना के साथ नहीं कर पाए। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इंडिया अलायंस की व्यापकता बढ़ेगी। और जहां तक आपने मीटिंग के पोस्टपोन होने की बात की है, अभी ये बताइए, अभी हमारे दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में साइक्लोन आया हुआ है, पूरा वहां पे चेन्नई में अस्त व्यस्त मामला हो गया है, तो कैसे हम आशा करेंगे कि स्टॉलिन आ जाएंगे। और भी कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहे कुछ मुख्यमंत्रियों के, ऑल ऑफ तक, इसलिए इसको थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन किया। और जब हम अभी हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे राज्य तमिलनाडु में आ, आ, अभी जो स्थिति है उसमें सुधार हो, तब हम अगली बार मीटिंग 10 दिन बाद कर लेंगे, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद मीटिंग कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। और ये इंडिया अलायंस पूरे 1-1.5 वर्ष के लगातार प्रयासों का आप फल प्रतिफल देख रहे हैं, ये आज का नहीं है। जब नीतीश जी ने छोड़ा, नीतीश जी को छोड़ने के पहले भी, आप 6 महीने पहले से उसकी उसकी शुरुआत हो गई थी, तमाम दौर की बातचीत हुई थी। उस दौर की बातचीत के बाद नीतीश कुमार ने वो छोड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ, और फिर वो उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ समझौता करके सरकार बनाई। उसके बाद से वो सारी कोशिशें होते 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 तो 2022 से कोशिशें होते होते आपने 2023 में ये परिणाम देखा। तो ये कोई मतलब ये स्थिर स्थिर है, ये अस्थिर नहीं है, मतलब ये स्थिर है। और आप इसमें देखेंगे आने वाले समय में सारे लोग मिलकर काम करेंगे। मुद्दे स्पष्ट हैं इसमें, सेकुलरिज्म को बचाना है, अपने डेमोक्रेसी को बचाना है, और अपने संविधान को बचाना है। अभी कोई साथी कह रहे थे कि इंडिया इंटरनेशनल, मैं किसी पर उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, इंटरनेशनल में बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं, वो उनका उनका मत हो सकता है, उनके सोचने का वो है। लेकिन जब हम पूरे हिंदुस्तान को ओवरऑल देखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर देश बहुत बड़े व्यापक विषमताओं में फैले। जैसे एक तरफ एक ही आदमी को सारा पावर दिया जा रहा है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में आपको याद होगा अभिषेक भाई, दक्षिण अफ्रीका में एक समय में जैकब जुमा नाम के एक व्यक्ति राष्ट्रपति होते, और उनके एक मित्र हुआ करते थे, यही सहारनपुर से गए हुए थे, गुप्ता जी, गुप्ता बंधु लोग, उन्होंने उनकी मदद की। और जब राष्ट्रपति वो बन गए, उसके बाद उनको रेल, उनको हवाई जहाज, उनको एयरपोर्ट, उनको पोर्ट्स, उनको मीडिया, उनको बिजली, जो भी चीजें देते थे, यहाँ तक जो सामरिक महत्व की जो चीजें हैं, जो स्ट्रेटजिक मतलब पोजीशन, रक्षा के सामरिक हवाई अड्डे का भी इस्तेमाल, यहाँ से उनकी मुझे याद है उनकी भांजी की शादी हुई थी 2015-14 में, 12 में या 13 में, कब मुझे याद नहीं है। अनिल कपूर और तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेस गए थे, और उस सामरिक जगहों का इस्तेमाल भी उनको करने की इतनी बड़ी, मतलब इतना पावर वो रखते थे। आज स्थिति क्या है कि जनता वहां गुस्साई, झगड़ा हुआ, वह गुप्ता बंधु वहां से भाग खड़े हुए, वो अबू धाबी में आजकल रहते, दुबई में कहीं रहते, बीच में रेड कॉर्नर नोटिस था, वो गिरफ्तार भी हुए थे, और जैकब जुमा आजकल जेल में है। तो मैं हमेशा नरेंद्र मोदी जी को भारत का जैकब जुमा कहता हूँ। इन्होंने जिस तरीके से भारत के संसाधनों पर उनका एकाधिकार कराने की कोशिश की है, वह बड़ा दुखद है। जैसे मैं आपके साथ आम आदमी पार्टी में था, मेरे परदादा आजाद हिंद फौज, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे परदादा को क्या पड़े कि वो आजाद हिंद फौज में दीवाने होकर लड़ रहे थे। उनका क्या मतलब था अभिषेक से, उनका क्या मतलब था योगी जी से, उनका क्या मतलब था नम्रता जी से। जो भी लड़ा उस समय, वो हिंदुस्तान के एक स्वर्णिम हिंदुस्तान बनाने के लिए लड़े, एक आजाद हिंदुस्तान बनाने के लिए लड़े। हम इसलिए हिंदुस्तान नहीं बनाए थे कि नरेंद्र मोदी, जिन लोगों की भारत की आजादी में कोई उनका कोई रोल नहीं है, वह आज हिंदुस्तान के लोगों को बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए, आरएसएस का कौन सा ऐसा कार्य है, मतलब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कौन सी आर्थिक नीतियां हैं जिसका हम और आप समर्थन कर पाए। ठीक है, आज हमें लगता है कि कॉर्पोरेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर जब कोरोना काल आया, जब लॉकडाउन लगा, तो क्या सच्चाई नहीं है कि 40% सैलरीज लोगों की कम हो गई?
यही कॉर्पोरेट कंपनियों में मैं भी एमबीए किया रहा, मेरे तमाम मित्र या एमसीए किए हुए तमाम मित्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, वह लोग जॉब कर रहे थे, 40-40, 35-35% उनकी सैलरी डाउन नहीं हुई, वो आज तक नहीं बढ़ी। आज जो है हमारे साथियों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, आज वो 24 घंटे के बंधुआ मजदूर बन चुके हैं, आज उफ तक नहीं कर सकते क्योंकि ईएमआई देनी है। आप लोग इंटरप्रेनर्स हैं, अच्छी बात है, आप लोग अपना स्टार्टअप कर चुके हैं, आप लोग अपनी अपनी जिंदगी में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप्स नहीं कर सकते, जो बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस में सक्सेसफुल, वो जॉब्स में ही उनको अपनी जीवन यापन करना पड़ेगा, उनके परिवार को चलाना पड़ेगा। आज वो स्थिति बहुत डिस्ट्रेस है हमारे मिडिल क्लास को, उस मिडिल क्लास के बारे में किसी ने सोचा नहीं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को उसकी तरफ भी देखना होगा और उस मिडिल क्लास को। और मैं एक चीज और बता, कांग्रेस पार्टी एक को समय में मिडिल क्लास की पार्टी भी कहा जाता, चाहे वो सरकारी नौकरी के लोग हों, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज के लोग हों, वह लोग अब आज के दिन में कुछ 24 घंटे हमारे बारे में हमारे आंख के सामने एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। सुबह व्हाट्सएप खोलते ही मेरे तमाम मित्र जो एमबीए के, वो मुझे लगता है कि वो उनका दिमाग ही खत्म हो चुका है, सुबह से लेकर शाम तक मुझे गालियां बक रहे हैं उसमें, वो मुझे मेरे वहां पे नहीं जवाब देते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे पर्सनल पे आके गालियां बकती हैं। मतलब हर आदमी को ट्रोलर्स बना दिया है नरेंद्र मोदी ने, ये सबसे बड़ी विडंबना है। मुझे लगता है इससे 2-4 आप सब लोग भी होते होंगे, मैं ही नहीं हो रहा हूँ, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग नहीं बोल रहे हैं, आप सब लोग होते होंगे अगर मेरी बात है। मुझे बस इतना ही कहना है, और हम लोग आशा करते हैं कि हम आप सबसे आग्रह करेंगे, आप सब लोग साथ दीजिए, क्योंकि अगर ये देश में लोकतंत्र नहीं रहा 2024 में, इस तरह की जूम मीटिंग भी नहीं कर पाएंगे अभिषेक भाई, हम इस तरह की अपनी बातें भी नहीं कर पाएंगे, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। नहीं, आपकी ये बातें हिटलर हैं, ये हिटलर हैं, ये अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज डेमोक्रेट, ये हिटलर है, इनसे आप आशा मत करिएगा। ये यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो आपके विचारों के से मतलब भिन्नता रखते होंगे। मैं कोई बात सिर्फ ये नहीं, कह रहा हूँ, कोई या इशू नहीं, कोई बात नहीं। तो आई विल हाँ, लेट विचारों की द भिन्नता अदर। ही जरूरी है, विचारों की भिन्नता ही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सूचक है। हाँ, बट क्या होता है कि लोगों से ही डेमोक्रेसी होती है। तो इफ पीपल आर लाइकिंग समथिंग, you can keep your eyes closed and say whatever you like, but if people like something, they like something, right? And कोई इशू हम नहीं, लोगों को सबको ये अब बात आदत हो गई है स्लेवरी करने की, है जो भी कहेंगे आप उसको, but I'm saying that there is something to learn. While we can put all of this back at Narendra Modi and the people and BJP and this right wing everything, कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, we can put everything on them. There is 2% that we have to look back and see what we can work on. And development, I'll tell you, is the big agenda. And I'm telling you my experience. You might not like it, and I shouldn't be saying this, but in Madhya Pradesh, I've seen when Congress was there was more conversation, less work, more corruption. There is more work and everything more, but there is more work. I think end of the day, it is a very, very, very strong bias for action. This is going to go out of the roof. I hope that happens. We want to make it happen as political consultants, as people behind politics. We want to go after action. We want to go every potholes to be filled, every person to be aware. We want very, very deeply political, active public going and doing it. We don't want people coming. You are basically a public servant. We are basically people who want to get served. And I think it is time. It is time. I think, why are we not getting angry and shouting out of the window and saying that we all should be really crazy right now? I don't know how can we sit so calmly and feel, oh wow, this is great, and acha AC mein baithe hue ye kar rahe. This is the time where all of us are feeling very, very uncertain, right? While we are giving vote and somebody is coming to the power, I'm still not sure. I want a good opposition. I'm really desperate to get a good opposition. Can you give me one? That is where we stand right now. But anyways, I'll hold myself and I will let Bridge had to say something. Sorry, Bridge. मिस्टर विश्वजीत, अभिजीत जी, 1 सेकंड सर, मैं एक चीज आर्गुमेंट में नहीं जाऊंगा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी गवर्नमेंट, in Congress regime, if you're not happy with the present Congress regime, you can raise your voice, you can criticize us, and we have to listen, और हम उस पर काम भी करते हैं। आज आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी आई है, ठीक है, वो इंडिया अलायंस में है,
वह भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आई थी। आप आज चले जाइए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप किसी भी कार्यालय में बिना पैसे के आप कोई काम करा लें, या उत्तर प्रदेश में जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपना मॉडल बनाया हुआ है, हर थाने में 5,000 रुपए के बाद ही आपका FIR दर्ज हो जाए तो बात बदलती है। 3-4 बदमाशों को मार दिया है, उसका एजेंडा बनाया है, 2-4-10 लोगों का इनकाउंटर कर दिया होगा, 100 लोगों का इनकाउंटर कर दिया होगा, कुछ लोगों के घर पे बुलडोजर चला दिया, लेकिन आज हालात बहुत खराब है। आप आवाज नहीं उठा सकते। आप सर, हमारा जिला अधिकारी कार्यालय पर हम जब प्रदर्शन कर लिया करते थे समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जब मैं आम आदमी पार्टी में था तो मैं आवाज उठा सकता था। लेकिन आज अगर मुझे आवाज उठानी पड़ती है तो अगर मैं दिल्ली के किसी कार्यालय पर जाकर नहीं आवाज उठा सकता, मुझे पकड़कर बंद कर देंगे, पकड़ के उठा के फेंक देते, या किसी भी राज्य में किसी भी जहां पर भारतीय जनता पार्टी हो वहां पर आप आवाज नहीं उठा सकते सर। सर, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये अनुरोध कर रहा हूँ, वी वांट नेशनल डेवलपमेंट, नॉट पार्टी डेवलपमेंट। आप नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट आप इसी तरह सर आप एक अच्छा ऑपोजिशन खड़ा करिए। मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस ऑपोजिशन ही नहीं सर, हम अल्टरनेट, मतलब इसका तो अल्टरनेट नहीं बनना चाहते इस मौजूदा सरकार का, मतलब ये इस तरह का तो सरकार हम नहीं चाहेंगे। वर्तमान समय में इसी तरह नेशनल डेवलपमेंट के नाम पर मुसोलिनी आया था, इसी तरह के नेशनल डेवलपमेंट के नाम पर हिटलर आया था। क्या हिटलर ने भी नेशनल डेवलपमेंट किया था? मुसोलिनी ने भी नेशनल डेवलपमेंट किया। क्या आप चाहते हैं उस तरह का रिजीम? मैं ये जो बात कहना चाहता हूँ बड़ी बड़ी गंभीरता की, इसको आपको समझना होगा। कुछ रोड बनाना अच्छी बात है, रोड बनना चाहिए, रोड बने भी है, ऐसा तो नहीं है ना कि 70 इयर्स में कुछ हुआ नहीं सर। आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं, तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं। आज हालात देखिए, विश्वविद्यालय बंद होते जा रहे हैं। Okay, I'll just pitch in here. Please. I come from a background of very extremely diversified background, and having a flavor of corporate में भी काम किया है. I'll not count my military service here. Definitely 15 years of military service comes close to me, but वहाँ पे एक बहुत ही different environment रहता है. Politics and all की तो बात नहीं होता है, but definitely क्योंकि अभी आप लोगों ने layoff का बात किया, pandemic का बात किया, all the kind of things. So I have done a lot of things to counter, all these effects of layoffs and all. I'll talk about it. But presently what I'm doing and why Indian politics interests me somewhat, I will first touch upon. I'm into international relations. मैं research करती हूँ international relations का. और जब हम बात करते हैं international relations में, I'll keep a mix of both English and Hindi. I hope that's okay, Aman ji. Perfect. जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस का बात करते हैं और ग्लोबल प्रोमिनेंस की बात करते हैं तो काफी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं. व्हेन आई से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, चाहे वो नेवल ऑफिसर्स जो हमारे कतार में जिनको ऑर्डर्स मिले हैं सेंटेंस टू डेथ के, या कोई आप 1920s में जो अमेरिका के से शुरू हुई है ड्रग एंड नार्को टेररिज्म, ये जो अमेरिका से शुरू है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस आज की डेट में इंडिया में, जम्मू कश्मीर, मतलब पंजाब तो 100% अनफॉर्चुनेटली ग्रस्त है. व्हेन आई से 100%, इट इज नॉट कि हर कोई बच्चा या जिसको, मतलब हर कोई बच्चा ले रहा है 100%, जिसको चाहिए उसको बहुत आसानी से मिल रही है. आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी. ठीक है, द वे इट इज गेटिंग सप्लाइड टू जम्मू कश्मीर, ठीक है, द वे द टेररिज्म इज नाउ चेंजिंग is all with the influence of, backed by America, Pakistan, and अभी आने वाले टाइम में टेररिज्म के साथ जम्मू कश्मीर में ये ड्रग्स का भी जो चीज है वो बहुत बढ़ जाएगी. सो अगेन व्हाई आई एम टचिंग ऑल दिस फ्लेवर, ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं और हम लोग सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म के नाम पे एक नैरेटिव बना रहे हैं. एंड I've worked in corporate also. Allow me to say, and I have worked in best of the organization, Wells Fargo, Genpact, Vedanta. So हर एक का फ्लेवर है, मैन्युफैक्चरिंग का भी है, बिजनेस स्ट्रेटजी का भी है, Genpact में all the senior level kind of positions. Unfortunately, they all are mentally colonized. Okay, all the festivals, all the days of American festivals are being followed. ठीक, I mean like मेरी टीम जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं उसमें भी काम कर रही है, तो मैं एज अ लीडर अगर उनको नहीं दे पा रही हूँ वो एक दिन का अवकाश, what is the use of me? Why is this? I'll come to the point of जो आप लोगों ने भी layoffs का बात किया. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे के सारे बिजनेस जो हैं US, UK, यूरोप ड्रिवन है.
सो हम स्लेवरी की तरह काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का नाम हमने पहले नहीं सुना था। अभी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम शुरू हो रहा है वो कब से हो रहा है, क्यों है? आई थिंक वी ऑल आर एक्सपीरियंस, वी ऑल नो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम किस तरह से शुरू हो रहा है। आई वाज इंटरेक्टिंग विद IIT चेन्नई, एंड जिस पैशनेट तरीके से वहां पे प्रोफेसर्स ये SMEs को प्रमोट कर रहे हैं और उनके लिए इंक्यूबेशन सिस्टम कर रहे हैं, ऑल फ्रॉम द लोकल एंटरप्रेन्योर्स, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। ये इकोसिस्टम केवल और केवल जब हमारी नेशनल और स्टेट पॉलिटिक्स स्ट्रांग होती है तब हो पाता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम डेफिनेटली अफेक्टेड। आई एज अ नॉर्मल सिटीजन, you know, is affected by the by the national politics. So that's why from international relations, I need to be in the space of this, politics, and I need to have that kind of understanding. अब ये जो हम ले ऑफ्स की बात करें, ले ऑफ्स क्यों हो रहा है? ले ऑफ्स इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने जो है, पैंडेमिक आया, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा नहीं डाला, नया बिजनेस नहीं आया। अब ये जब नहीं आया है नया पैसा, डेफिनेटली या तो ले ऑफ होगा, या लोग जाएंगे, या उनका सैलरी कट होगा। अब ये जब सैलरी कट हो रहा है तो अब ये इनको कहाँ पे, अब आइदर दे आर विद द MNCs और विद देयर इंडियन कंपनीज। पैंडेमिक के टाइम पे सबसे ज्यादा ले ऑफ्स हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो हायरिंग भी हुई है वो भी MNCs ने करी है। आप लोग अगर स्टैटिस लेंगे, आई हैव डन माय वर्क ऑन moonlighting. I have done my research paper which will get published in International Journal of either Springer or Sage. I'm aligned with the BRICS. So all that work is done with the South African University, which has got funded with BRICS. So जो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया की है और वो जो कॉर्पोरेट्स किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी डायनेमिक्स में आपको थोड़ा सा फ्लेवर करती हूँ समझाने, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ उस फ्लेवर को समझाने की। अब जब ये अंग्रेजी कंपनियां, ये MNCs इनको ले ऑफ कर रही हैं, आप कभी भी देखिए डायनेमिक में 6 महीने बाद फिर से आपको निकल जाएगा 20,000 लोगों की हायरिंग हो रही है। तो क्या वो बिजनेस आ गया एकदम से कि 20,000 की हायरिंग हो रही है और इससे 6 महीने पहले जो है 10,000 को फायर किया? Most of the firing has been done by the MNCs, and major impact is on India. Now there come the role of either the startup ecosystem, that who stops you to be an entrepreneur first. Yes, there are challenges. Even I'm not an entrepreneur yet. I'm still a solopreneur. I call myself a solopreneur. Then all these Indian PSUs हैं, इनका role आता है. Apart from this, all these MBS people who are calling you, sir, I'm also an unsecured veteran. Okay, please, so don't please consider that I'm a secured veteran. I do work along with all the kind of work that I'm doing with the international relations. Who stops them to do or to follow the moonlighting? What is moonlighting? I have advocated and will be taking it forward for policy advocacy. India may definitely government, South African government is against moonlighting. Moonlighting is I'm sure someone said who belong to corporate, they would be knowing this concept of moonlighting. Moonlighting is having multiple sources of income, which is very common in West. But again, हमारे इंडिया में due to whatever reasons इसको acceptance नहीं है. However, जब ये moonlighting का थोड़ा सा concept emerge होना लग गया था, moonlighting क्या होता है? आप एक कंपनी में काम करें, लेकिन आप अपनी दूसरी या तीसरी भी source of income खोल के I think we'll have to come back to the topic where yes, I will just इसके बाद. So ये सब dynamics के लिए कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हम एक इंसान को blame करें. I mean, that is the Prime Minister of India. First and foremost, I think that person is very strong enough कि हम एक इंसान को सब 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन का कष्ट है उनको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं. However, ग्लोबल प्रोमिनेंस या ग्लोबल स्टेज पे जो हमारे इंडिया का नैरेटिव चेंज हुआ है, आई थिंक दैट इंटरेस्ट्स ऑल ऑफ अस. That is one very important thing. Secondly, what Abhijit ji has said, I hope Abhijit ji has said, please give us a strong opposition. Today we are talking about Telangana कि तेलंगाना में जीत हुआ है, तेलंगाना में जीत हुआ है बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से. ग्रेटर हैदराबाद रीजन में जब पता चल गया था दैट जीत वहां पे लेस लाइकली है, दैट इज द रीजन व्हेन इन लोगों ने, आई मीन लाइक कांग्रेस ने जो आउटर स्टेट्स हैं, जो आउटर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे इन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया था और वहां से वो लोग वोट लेकर आए. एंड देयर आल्सो इन तेलंगाना आल्सो बीजेपी 7% से 14% का वोटिंग शेयर लेकर आया है. So that is the dynamics we would, I mean again, as like everyone says कि हमें किसी पार्टी से कोई love loss नहीं है, but we all are interested in our development, in our nation's development. So we would like to have a strong opposition, and we would like to definitely have citizens who work passionately towards national development and not just keep lazing around कि हमको नौकरी चला गया और हमने MBA किया, we are not getting. I think
there are immense opportunities and immense way to just earn money. I'll take a pause. Any idea what time we are intending to close the meeting, or we want to continue? I think we have another 15 minutes or so to 20 minutes or so to close the conversation. So we want to quickly My request is, and my request is, let everybody one by one who has not spoken, give them 2 minutes or 3 minutes so that they can also introduce themselves. Then we can plan about future, what to do, what not to do. yeah. Yes, I think who is Harmeet and Bridge, you had something to say before we get to people. Yeah, so Shahi साहब, आप जो मोदी के अगेंस्ट पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे थे, मेरा एक पैरेलल है मोदी के अगेंस्ट, और ये दोनों लीडर को मैं मतलब बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ. Modi, only parallel which can be drawn with Modi is Indira Gandhi, and I have points to say that both are extremely strong leaders, very extreme crowd pullers. और आप इवेंट्स भी देखो तो इंदिरा ने जब ज्वाइन किया था पॉलिटिक्स और जब उन्होंने लास्ट डे उनका था, उस बीच का आप एक एक चीज देखो, मोदी का एक एक काम देखो, वो सारा कुछ उनके साथ वही हो रहा है. Peak of her thing was 1971, and you will see that POK probably in future would be peak of Modi. ठीक है? So I would not go into detail because it will become very long. I think we'll have to move on because there can be a very good conversation out here, but we should have a separate session. Absolutely. The only parallel which we can draw is Indira Gandhi. And Congress dare not draw it, because the moment you draw it, you will be abusing Indira Gandhi. So stop abusing Modi, because someday someone will say what I have said this thing in a larger forum, and you would be in a bigger problem. शाही जी, दूसरी बात ये बता रहा हूँ आपको, और ये बहुत ध्यान से आप सुनिए. मैं कुछ एक नाम बोलूंगा, नॉट फॉर अ नेम ड्रॉपिंग. आप इन लोगों का नाम आपको पता होगा. एक आपके राजीव गौड़ा थे, रिसर्च सेल के हेड. ठीक है. अजय कुमार जो आपके झारखंड के थे, वंशी चंद अभी वो आपके पीसीसी में है, कृष्णा जो आपके इंडियन यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं, गिरीश चंदोक जो आपके गोवा के इंचार्ज हैं. ठीक है. आप इसमें से मैं बोलते जा सकता हूं. आप इसमें से किसी से भी जाके पूछिएगा कि ब्रजमोहन चतुर्वेदी कौन है. ठीक है. आपको दो चीज मिलेगा. पहला कि रिस्पेक्ट, जो पॉलिटिकल रिस्पेक्ट होता है वो देंगे कि ये बंदा बोल रहा है तो सुन लो बात. दूसरा जो आपको मिलेगा कि ये बोल दिया है तो सही होगा, और जो आप बोले थे वो सारा का सारा प्रॉब्लम है कांग्रेस का. जिस दिन आप मोदी को गाली देना बंद कर दोगे, कांग्रेस बड़ा होना शुरू हो जाएगा. दिस इज माय ओनली पॉइंट. And I think that we're not here to guide and consult right now. We are here to find a way forward. मेरा ये सिंपल सा पॉइंट था कि ideally we should stop doing that. I mean, Congress is a large party, extremely large party. People have their own views. So let's not talk anything against any of these parties. Yogi ji is left. Yogi ji is left. Oh, sorry. No, Yogi ji is there. Yogi ji is there. Yeah. I mean, Yogi ji, you want to say something, and then we can come to a closure. Yeah. I'm done. That's what I wanted to say. Thanks, Braj. अनंतरा, हाँ, अंतरंग योगी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जी. मैं एक 4 लाइन की पोएम से स्टार्ट करता हूँ, मतलब इंट्रोड्यूस करता हूँ, जो हमारी मींस जर्नी है. दैट सेज दैट मोदी हो या मनमोहन, ओबामा हो या ट्रम्प, हर्षवर्धन हो या केजरीवाल, लालू हो या नीतीश, सब झुकाते हैं पूंजीपति के सामने अपना शीश. करते हैं मन की बात गरीबों का, काम करते हैं अडानी अंबानी पूंजीपति अमीरों का. ये बात सबको समझने की आवश्यकता है कि प्रेजेंटली वी आर नॉट हैविंग ए पॉलिटिक्स governed by the people. It's not at all a democracy. It's a capitalistic economic setup, that is centralized economy over here. So unless we have decentralized economy, that is economic democracy,
That is, without economic democracy, political democracy is fraud. So whatever we are actually being governed right from the regime after British era, from Congress to presently governed by the BJP, it is all capitalistic economy in whole of the global scenario. And the group from where I come from is proud. We are working in almost 200 countries on the making of the spiritual soldiers like Chanakya, who had made a spiritual soldier. And we, it may look utopian to people, but we have been doing a lot. We have our own party setup, and we have been creating alternative. And I will conclude in one line that if the control of the economy is in the hands of the local people, then the leadership will come up from that very region, and those leaders will come to the parliament, and they will have the system. Presently, the system is being governed by the handful of people, right from आप म्यूट हो गए आप म्यूट हो गए आप so whatever we are talking is actually all speed economy. I mean, governed by the handful of people. So that is why, unless we create an alternative or think about the alternative on the ways of the Vedas, what we say, Sangha Chadam, Sangha Dadam, Sango Manane Sijanatam, Deva Bhagam Yata Purve Sanjanana Upasate. So on that economy, what Rig Veda says, no work has been done, and whosoever is doing, they will actually, a time will come that they will change the system. Thank you. Thank you. Right. No, I think we've covered. Harmeet is here. Is there? No. He. I think it's dropped off. It's dropped. So I think everybody said. Closing remarks from anyone. I'll say something before Abhishek. I think you're coming. So yes, my points yes, are I that have. I have. Okay, you go first. You go first. Input. You go first. In early days of Congress, after independence, Congress ideological position was centrist actually. From Jawaharlal Nehru to Indira Gandhi, Congress was on that path. So even till Rajiv Gandhi, actually, not till Rajiv Gandhi, but till Indira Gandhi. And after Indira Gandhi, Congress slowly shift their position from center to center left. And we can measure this shift in two slogans. One Indira's slogan was "Hum do, hamare do," and new Rahul slogan is "Jiski jitni hissedari, uski utni bhagedari." So that is shift, and Congress is suffering majorly only because of this ideological shift. And this issue is very big, and we can debate very long. We can debate. So, but in short, if Congress not change their position, because in last 9 years, BJP is trying to change. One side they are polarizing, and other side Modi is chanting slogan like "Sabka Saath, Sabka Vikas." So for central stage and for getting power, your centric and centrist ideological position is equally important. This is my opinion. Okay, Thanks. okay. Thanks, Abhishek. I'll just add a little. I wanted we've heard everyone. To my mind, getting this entire discussion towards purpose is not going to serve any electoral benefit. That's what we're discussing today. So even if someone was telling me earlier that
around 33-35% is the total vote share of BJP, and 63% is actually those guys who have not given the mandate to BJP. I believe the onus lies on the messaging that compels someone to walk to the booth. And it is here that the battleground has been set and the narrative is absolutely in the hands of the BJP. Now, firmly, we have to restrict our conversations in this particular context only on electoral victory and how the stage was set and what the messaging was done. Guys who understand their voters, guys who understand their nuances, and they understand what will compel them or influence them to walk to the vote and vote for them. That is the winning formula. And Congress has missed the plot completely. Now to define them into complex structures, centrist and all, is absolutely something that they should be doing in their war rooms. And if they're not doing, they are again for bigger surprises in 24. That's my take. My take is also to the other person who said that we should be thinking on a certain parameter regarding Congress. The onus is definitely not on the voters or citizens to even consider Congress as an alternative. They have to amplify themselves, define themselves, and convince me to think about them. So as a pure voter, as a citizen, I'm watching. Like Parul said earlier and Namrata stressed on it, as a corporate or someone who's on this side of the table, I like the respect I'm getting on the world stage today. I like the way people perceive us. I like the way I come from the Web3 and blockchain, the tech space. I like how we are getting a very nice, patient hearing from the tech giants, and they are coming on the table, and we are getting a seat on that table, on that round table, and we are being listened. So this was not earlier, not present there earlier. This is my personal experience. Electorally, election के context में मुझे convince कीजिए कि आप एक alternate दे सकते हैं, एक opposition हो सकते हैं. आप मेरे लिए क्या benefit करेंगे, and compel me to come out, walk out and walk to the booth and vote for you. BJP is currently winning in that state. That's my 2 cents. I'll close for now. Okay. Any final concluding remarks, Dr. Pathak? Yes, I would. Yes. Since Abhijit ji has, I think all of us. We have heard so many different perspectives, and I'm feeling very energetic evening to hear so many diverse political narratives. But I just would like to say one thing. At the end of it, whatever has happened, everyone's personal experience and analysis there. But I think we must need that we have to find what happened in 3 states and what the way forward and what we can understand from here. I think we have to go back to the Plato. We have to understand what he said about Republic thousands of years ago. The human behavior is tend to flow from 3 resources. One is desire. Second is your knowledge. And third is your emotion. So the political narrative, whichever the party is, whomsoever be the person is, if we understand that if the human behavior is tried to be diverted towards oneself, one has to address these 3 issues. Either you will, touch the knowledge chord, desire chord, or emotion chord. So we have to see how these 3 states and the political parties, those who have got votes, have clinged to those 3 desires. And number 2, which is again we find in the Plato's book of Republic, he says after introspection. So introspection not necessary कि जो हारे वो करे, जो जीते उसे भी करना होता है. So whether introspection means listening to your thoughts or listening to the situation. Very well said. So I'm sure the things will be understood properly. So I think if we read Plato quite often and his philosophy, I think we will understand Indian politics better. Modi ji's narrative, again, the answer is there कि हम चाहते हैं opposition निकल के आए. प्लेटो कहता है कि कोई आदमी और कोई political party opposition बन नहीं सकती, वो situation बनाएगी. Right. तो जब तक कांग्रेस opposition बनने की कोशिश करेगी, वो leader नहीं बन पाएगी. ऐसा प्लेटो कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता. They are in the race to come second. Yeah. Yeah, they are. Exactly, Amanji. This is what. That's very true. I want to raise my. Yeah. That's it. So I think. अगर आप लोग परमिट करें तो एक बात मैं कह दूं.
नहीं प्लीज कहिए। ये 3 राज्यों के चुनाव से जो मैं सेंस कर रहा हूँ आप सब लोग की बातों से, हो सकता है मेरा मेरा आप लोग से मत विभिन्न हो। मुझे लग रहा है आप लोग विदाई गीत गा रहे हैं, विदाई गीत हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं की नहीं गा रहे हम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, और क्योंकि मैं तो किसान आंदोलन से आया हुआ व्यक्ति हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आया, उसके कई कारण होंगे छोड़ने के, करेक्ट है। और वो इसलिए है क्योंकि जब मैं इन लोग के अंदर बैठकर काम कर रहा था, जिस पर्सपेक्टिव से आप गए थे ना, मैं बहुत सारे काम वहां कर भी रहा था। लेकिन मुझे लगा कि जिस तरीके से समाज को जोड़ने की बात, उनका नारा ही नारा है, बस सबका साथ सबका विकास। वो अपने देश के माइनॉरिटीज को अपने साथ नहीं रखना चाहते, दलितों को साथ नहीं रखना चाहते, पिछड़ों को साथ नहीं रखना चाहते, उनके साथ भोजन नहीं करते। हम दिल्ली और एनसीआर की बात छोड़कर हम जब बाहर की बात जाएंगे तो बहुत सारी चीजें परिवर्तन। मैं भी पला बड़ा एक ऐसे कॉन्वेंट एजुकेशन में रहा हूँ, मैंने जीवन में बहुत सारी चीजें नहीं देखी, लेकिन जब मैं राजनीति में आया हूँ तो मैंने बहुत सारी विषमताओं को देखा है। जैसी सोच अभी अपने कई साथियों की यहाँ पर है, ऐसे ही मेरी सोच एमबीए करने के दौरान थी। अभिजीत जी, मेरी भी जी जी सोच जी मैं ऐसी ही बिल्कुल थी। समझ सकता मैं एमबीए कर रहा था तो आप समझ सकते हैं मेरी सोच कैसे, मैनेजमेंट और एमएनसीज में मैं भी काम कर रहा था, मेरी सोच कैसी हो। मैं आप लोग को देख कर नहीं, लेकिन जब मैंने पॉलिटिकल कदमों को रखा और मैं जब सड़कों पर पथरीली जमीनों पर चला, लोगों से मिला, तो मैंने देखा कि भारत के अंदर विषमताएं कितनी। और जहां तक जातिगत जनगणना की बात, जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस होना इसलिए जरूरी है, मैं आप सब लोगों को अपनी बात को कहकर खत्म करूंगा। हमारे देश के अंदर अभी भी सोशियो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और शैक्षणिक, हम अभी तक डाटा हमारे पास है ही नहीं। समाज के कई ऐसे वर्ग विशेष के लोग हैं जिनके अभी तक नौकरियों में, छोड़ दीजिए पटवारी तक नहीं, पटवारी तक नहीं, वो बहुत दूर है। और अगर हम एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हम ठीक है, मैं भी, मेरे भी परिवार में बहुत सारे लोग एमएनसीज में भी काम करते हैं, हमारे परिवार के लोग तमाम ब्यूरोक्रेसी में हैं। मैं अगर प्रसन्न हो जाऊं, अगर पर्सनली, कि प्रबल प्रताप शाही एक राजपूत है और वो खुश हो जाऊं अपर कास्ट का होकर, तो मैं अपने देश के तमाम लोगों के साथ, उस दलित वंचित समाज के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा हूँ। तो मैं I इस तरह की totally ये नहीं मैं कह रहा हूँ। समझ गया मैं उनकी आप पीड़ा को मैं उनकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, मैं उनकी पीड़ा को समझ रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं कही, सही कहा उसने, जिसकी जितनी संख्या है उसको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी आपको आने वाले साई समय साहब, में। अंडर साई साहब बहुत मैं बड़ा आपको होगा। रोक कर एक चीज बताता हूँ, ठीक है? और ये मैं विथ ऑल 10 years of whatever little political consulting experience I have, दो चीज बताता हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र हैं कांग्रेस में और बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है? और उसके बाद में जो स्टेटमेंट है वो बोलना बहुत जरूरी है, ये और ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि आप कांग्रेसी हो, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं किसी का नहीं हूं, ठीक है? भारत में आज भी सबसे ज्यादा जो पॉपुलर और सबसे ज्यादा स्ट्रांग पार्टी है वो कांग्रेस है। और मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, देयर आर कांग्रेसीज एंड देयर डिसग्रंटल्ड कांग्रेसीज। और ये बात मैं आज भी बीजेपी के लिए, हम लोग जितने भी हैं ये बीजेपी के लिए नहीं बोल सकते, दे आर भाजपाई एंड दे आर एंटी भाजपाई और डिसग्रंटल्ड भाजपाई। लेकिन हम ये आज बोल सकते हैं देयर आर कांग्रेसीज, दे आर डिसग्रंटल्ड कांग्रेसीज एंड दे आर एंटी कांग्रेसीज। तो हम इंडियन वोटर्स को ये 3 टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, कांग्रेसीज, एंटी कांग्रेसीज एंड डिसग्रंटल्ड कांग्रेसीज। हम आज भी मोदी के 10 साल के शासन के बाद भी नहीं बोल सकते हैं भाजपाई, एंटी भाजपाई एंड डिसग्रंटल्ड भाजपाई। तो आप समझ सकते हो कि भारत आज भी एक प्राइमरली वो देश है जहां पे कांग्रेस विचारधारा बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी में भी कांग्रेस की विचारधारा बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जब आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप इतना ज्यादा गलत काम आज कर रहे होगे, इतना ज्यादा गलत काम कर रहे होगे कि लोगों को डिसग्रंटल्ड कांग्रेसी बहुत ज्यादा आपने बनाए हैं। और आपको ये जितना बोल रहे तो उस पर नहीं सोचना है, ये डिसग्रंटल्ड कांग्रेसी जो बनाए हैं उसको कैसे आप ठीक करो सोचना है। और मैं बस इतना ही बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे बाकी लोग I think Okay, we got the I'll just add one thing here क्योंकि OBCs के, had that been the case perhaps they would have won in Chhattisgarh. नहीं and you're right. See, the problem is कि हम I लोगों will को not दुनिया dwell भर much.
we are considered minority all around the world. And I mean, yes, and secondly, I'm where sorry will to Hindus interrupt you, go? Abhijit Where ji, but will they have to really stop playing this victim card politics. It is not working. चाहे वो मणिपुर में जाके आप लोग करें, when I say आप लोग, I'm saying for this for Congress, ये victim politics है, किसी को victim बना के और आप लोग उनके नाम पे votes ले रहे हैं, this will not work. ये आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन इन 3 स्टेट्स में जो हुए हैं, वरना छत्तीसगढ़ आप लोगों के हाथ में था. देयर वुड हैव बीन नो चांस कि छत्तीसगढ़ निकलता. आई विल टेक अ पॉज नाउ. Right. I think we are almost through with our conversation. I just want to hear one last view from Parul before we close the session. Parul ji, agar aapka, what is your sense of this? Because you are observing it from a very different angle. I just wanted to get your last. I just think that we should all pray for a strong leadership and a strong opposition. Because if we have the right balance, then nobody can stop us. And nobody can stop India from becoming a superpower. Because checks and balances are very important. A very good leadership is important, as well as checks and balances. So if we have a strong leadership and a strong opposition, it'll be like a way to go for India. That's it. I really don't want to get into more controversy, but I think as an Indian, as a citizen, this is what I wish and desire for my country, that we should have a good leadership and a good and a good opposition. Right. So Namrata ji, Parul ji, and everyone here, Shri ji, I think you have shared very interesting conversation. This conversation can go on for days, I'm telling you. And But we it all was will very be interesting. excited. It was amazing listening to everybody, and difference of opinion is also very important. It creates a spice in the whole this thing, because वो मसाले के बिना सब्जी स्वाद नहीं लगती. मजा नहीं आता. You're right. You're so right. Diversity adds to spice to any conversation or any discussion. So I just see everybody's views, and that is what democracy is all about. And because सबका common एक objective ये है that India as a nation should progress. We Indians as a nation, should move forward in life. So goal, objective सबका एक ही है. Right. So I think we will conclude. I just want to add one line and then we can conclude. जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है वो, जिसमें देश का प्यार नहीं. Thank you everyone. Beautiful. Wonderful. Thank you everyone. Such a pleasure. Thank you. Thank you. Thanks everyone. Bye.